Hello children, how are you all of you? Fine. It is said that change is the integral part of life. परिवर्तन जो है ये संसार का नियम है. तो मैंने भी आज जो है थोड़ा परिवर्तन किया है. Always I stand in front of you and draw so many things on the board, and after I explain you everything, आज जो है थोड़ा relax mood में हूँ. I don't want to stand. आज खड़ा नहीं होना है, आज बैठ के पढ़ाना है. इसलिए जो है आज सोच रहा हूँ कि भाई जरा थोड़ा रिलैक्स होके आप लोगों को पढ़ाएं. एंड लास्टली इन 2 lectures I explained you the human digestive system and respiratory system. Okay, now next life process. The next life process is the transportation in human being and as well as transportation in plant. In your textbook, first of all, transportation in human being is given and then transportation of plant is given. But I am doing little ulta. मैं थोड़ा reverse में जा रहा हूँ. So first of all, I will explain you the transportation in plant. And then we will talk about the human being. फिर हम लोग human being के बारे में बात करेंगे because heart को मुझे आपको बहुत डीप में एक्सप्लेन करके देना है, लिम्फ सिस्टम को एक्सप्लेन करके देना, हाउ ब्लड इज सर्कुलेटेड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ब्लड इन आवर बॉडी. दैट ऑल थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड इन नेक्स्ट टॉपिक, बट इन दिस पार्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड the transportation in plant. So first of all, let's try to understand the meaning of transportation. Transportation का आज हम लोग जो है मतलब समझते हैं सबसे पहले. So transportation का सिंपल सादा मतलब है that the carry one thing from one place to another. एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को जो है लेकर जाना. That is the simple meaning of transportation. But in our biology, in science, okay, from the carrying the different kinds of material from one part of the body to another part of the body. बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कुछ भी कैरी करके लेके जाना, न्यूट्रिटिव मटेरियल्स कैरी करके लेके जाना, ऑक्सीजन कैरी करके लेके जाना, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करके लेके जाना, दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन ट्रांसपोर्टेशन. इज इट क्लियर? क्या इतना आप लोगों को समझ में आया? अगर ये आप लोगों को अगर क्लैरिटी है, अगर आपको इसकी समझ है, ट्रांसपोर्टेशन अगर आप समझो तो प्लांट में जो है ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है. अब फर्स्ट थिंग इज दैट, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एज अ ह्यूमन बीइंग प्लांट डज नॉट डू द वेरी हार्ड वर्क लाइक अस. हमारे तरह इतना आपको बहुत काम ज़्यादा नहीं करते, तो उनको इतनी एनर्जी की जो है वो नहीं होती, उनका एनर्जी इतना कंज्यूम नहीं होता है. ओके, लेकिन फिर भी कंज्यूम तो होता है. तो उनमें जो है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस एंड डिफ्यूजन ऑफ एक्सचेंज ऑफ वाटर, ओके, वो उन लोगों में होता है. बट इट इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, एकदम स्लो प्रोसेस के अंदर वो चीज़ होती है. एंड हाउ इट हैज़ टेकन प्लेस, कैसे जो है ये होती है, कौन से पार्ट्स प्लांट के अंदर हैं विच पार्टिसिपेट इन दैट, जो उसमें काम करते हैं. आप लोगों ने लास्ट ईयर व्हेन यू वर इन 9th स्टैंडर्ड, एट दैट टाइम आप लोगों ने, मुझे जहाँ तक ध्यान है, आप लोगों ने एक्सचेंज ऑफ गैस और एक्सचेंज ऑफ वाटर के लिए स्पेसिफिक वर्ड जो है स्टडी किया था, एंड दैट वाज द डिफ्यूजन. मुझे याद है बराबर से. ओके ओके, सो दैट डिफ्यूजन मीन्स व्हाट? डिफ्यूजन मीन्स फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सेल टू मूव समथिंग इनसाइड द सेल, एंड फ्रॉम इनसाइड द सेल समथिंग मूव आउटसाइड द सेल. मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, exchange of toxic material and exchange of nutritive materials from cell to outside and outside to cell. That is the diffusion. उसको हम लोग diffusion बोलते हैं. Okay, one thing is that. Second, plant में water and food carry करने के लिए 2 specific tissues होते हैं. उसके बारे में भी आप लोगों ने tissues में पढ़ा था. That is the xylem and phloem. मैं ये इसलिए याद दिला रहा हूँ, when we will understand this one here, जब हम यहाँ पर इसको समझेंगे, सो ड्यूरिंग दैट टाइम आपको ये सब वर्ड्स दिमाग में आने चाहिए. ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज द CO2 फ्रॉम द एटमोस्फियर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल in their cell, transform the solar energy into chemical energy by the process of photosynthesis that you know very well.
through the process of photosynthesis and synthesize carbohydrate, that means the glucose. They produce the glucose by this process in it. Plant absorb water and other raw material elements necessary for the constitutions of the body from the soil through the root, and these substances are required to be transported in different part of the body. It means whatever the food material is produced by the plant, first thing is that, and second thing, whatever water or oxygen or the carbon dioxide it is taking from the outside, तो उसको कैरी करने के लिए, उसको लेके जाने के लिए whatever system is there in the plant, and that is the part of transportation. Is it clear? So उसके लिए जो पहला first of all I explain that word only, and that is the diffusion. So let's talk about, first of all try to understand, let's talk about the diffusion first of all, उसके बारे में हम लोग सोचते हैं. So what is the exact sense of diffusion? So if the distance between the root and the leaves of leaves is less and negligible, the energy and raw material including water can easily be transported in all the part of the plant body just through the process of diffusion. तो diffusion का मतलब होता है एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पे चले जाना, diffuse होना. Is it clear? Now transportation conducting system. When in plant the distance between the root and leaves is large sorry, the process of diffusion is not sufficient to fulfill the need of energy of root and that of raw material and water in the leaves. Under sorry, these circumstances, there has to be a suitable conducting system, means there is appropriate system in the plant. The plant, unlike animal, do not move from one place to another, as I told you earlier. So they need much less energy as compared to animal. Okay, even then the energy is stored in leaf and raw material and water absorbed by the root and transported to the different part of the plant body. So which tissues are for that? So vascular tissues are two more type of vascular tissues in the plant, that is the xylem and phloem. ये दोनों याद रखना, so many times in exam it asks the point of difference between the xylem and phloem. Xylem tissue क्या करता है? It carry the water and mineral from the root or from the bark or from the leaf. वहाँ से इकट्ठा करता है पानी को, मिनरल को, and after carrying that it reach to the leaf तक पहुंचाता है. तो जो टिश्यू वाटर को, मिनरल को स्पेसिफिकली फ्रॉम द रूट से कैरी करके प्लांट के लीफ तक पहुंचाती है, दैट टिश्यूज आर कॉल्ड द जाइलम टिश्यू. ओके, ठीक है. एंड सेकंड, फॉलन. whatever food material has produced in the plant, यानी कि लीफ you know very well it does the work of photosynthesis. photosynthesis का काम लीफ करता है. so whatever food material is produced in the leaf में जो भी food material produce हुआ है, okay, it is carried by the different part of the plant by a specific tissue and that tissue is called the phloem. तो xylem टिश्यू का काम पानी और मिनरल को लीफ तक पहुंचाना और फॉलन टिश्यू का काम तैयार हुए खाने को लीफ के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाना और लीफ को हष्ट पुष्ट रखना, यानी कि एनर्जेटिक रखना, उसको जो है मटेरियल सप्लाई करते रहना ताकि वो अपनी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको अंजाम दे सके. सो दैट इज द फंक्शन ऑफ फॉलन टिश्यू. Okay, now let's try to understand how water is transported in the leaf. in plant में water कैसे transport होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. Okay, so absorption of water by the root. The epidermal cell of the root in plant in direct contact with the soil. तो याद रखना यहाँ पे epidermal cell जो है वो रूट के साथ में सीधा उनका कनेक्शन बाहर की दुनिया यानी कि मिट्टी के साथ होता है. These cells absorb mineral iron from the soil. So the different
difference is created and the concentration of these ion between the root and the soil. So eliminate this difference, water enter the root, यानी कि that is the diffusion, यानी अंदर की जो भी बेकार चीजें हैं, गैसेस हैं, वो बाहर आ गई, अंदर की जगह खाली हुई और बाहर से मिनरल और वाटर ने प्लांट के अंदर रूट के थ्रू अंदर जाना शुरू किया. एंड देन क्रिएशन ऑफ वाटर कॉलम, और फिर प्लांट में एक वाटर कॉलम जो है तैयार होती है. वाटर प्रेजेंट इन ऑल द सेल in the intercellular space of the plant get connected together and create a continuous column of water in the xylem. Okay, then conduction of water by the root pressure. Now how this water has go upward, because अब एक चीज तो पक्की है कि अगर हम लोग नॉर्मल अगर अपने घर में भी देखें, अगर नीचे अगर ये आपका नल है तो बराबर है, अगर उससे अगर टंकी तक अगर आपको पानी पहुंचाना है तो या तो इतना प्रेशर आना चाहिए, और अगर प्रेशर नहीं है तो यू यूज द मोटर. अब प्लांट में तो ऐसा कोई मोटर फिट नहीं है ना भाई, प्लांट में ऐसा कोई मोटर फिट नहीं है. देन हाउ प्लांट कैरी दैट वाटर अपवर्ड, एंड हिंदी फॉर दैट वन वर्ड इज द केशाकर्षण. ओके, एंड इट्स रियली अ बिग फेनोमेना, बराबर है, बिकॉज ग्रेविटी के अगेंस्ट में वर्क करना इट्स रियली चैलेंजिंग, but that function is done by the plant. Okay, so see how it has done. The water absorbed by the cell of the root collected in the parenchyma, it is a one kind of tissue, parenchyma cell and root, and extract pressure on the xylem element. This is called the root pressure that cause water is parenchyma cell is enter the xylem element water. So entering the xylem pushes the water column upward, plant having quite low height, so the conduction of water by root pressure. But the higher plant, the root pressure is not very effective and sufficient to push the water as a great higher observed in many plants. So conduction of water by the suction force created due to the transpiration, and this is the another function. The higher plant, in order to conduct water in their higher peak, employ this method of transport of the water and dissolve the mineral salt. The phenomena of losing water in form of water vapor through the aerial organ of the plant is called the transpiration. Aerial organ मतलब कैसा, यहाँ से एक ब्रांच ये है, दूसरी ब्रांच ये, यार ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज द एरियल. तो यहाँ से जो है ट्रांसपिरेशन का काम होता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट ही आगे जाकर ट्रांसपिरेशन, उसी का एक एक्सटेंडेड नेम है. इज इट क्लियर? The stomata of the leaf, presence of sunlight, lose water in the form of water vapor. As a result, the amount of water of the cell in leaf decrease. To compensate of this loss, the water is obtained from conducting element of xylem. This due to the evaporation of the water molecule. The suction force is created in the leaf cell, and this suction force gradually experienced in the xylem element and other cell of the root, so the water flows in the upward direction of the plant. Thus in the higher plant the stomata remain open during the daytime, क्योंकि उनको बैलेंस करना पड़ता है. As the suction force created due to the transportation become the main force of the transport of water through the xylem element. So इससे आपको इतना तो समझ में आया होगा कि जो xylem जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में कितना बड़ा रोल प्ले करता है. तो ये तो आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, उसके साथ में एक और कंसेप्ट है, दैट इज द ट्रांसलोकेशन, यानी कि फूड का मूवमेंट, बराबर, उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं. सो ट्रांसलोकेशन इन अ प्लांट, कार्बोहाइड्रेट इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, which you know it has prepared in the leaf of the plant. In the green leaves, the phenomena of the transportation of the carbohydrate from the leaves to the different part of the plant body is called the translocation. Means देखो अब बराबर से समझना, एक बार फिर से क्लैरिटी दे देता हूँ. वाटर मिनरल का लीफ तक पहुंचना ट्रांसपोर्टेशन, बराबर है, जो xylem टिश्यू से होता है. Prepare food in leaf to
reach the different part of the plant through the phloem tissue, and that process is the translocation. खाने का movement translocation, water का movement ट्रांसपोर्टेशन. तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लोकेशन में दिमाग में रखना, भूलना नहीं. ओके. By the process of photosynthesis in the green leaves, the phenomena of the transportation of the carbohydrate from the leaves to the different part of the plant body is called the translocation. So translocation of organic substance through the phloem tissue. The translocation of food substance occur the phloem tissue. For this purpose, the main constitutional elements of the phloem tissues and the sieve cell and sieve tubes. तो याद रखना, यहाँ पर sieve जैसे वहाँ पे पैरेंसीमा हुआ करता था, यहाँ पर जो है sieve cell और sieve tubes है जो ट्रांसलोकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं. ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, ये आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए. The process of translocation occur in both अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. सीधी बात है, क्योंकि हर एक पार्ट में खाना पहुंचाना है ना भाई, बराबर है. डायरेक्शन फॉर द प्रोसेस एंड द एनर्जी रिक्वायर्ड ऑब्टेन्ड फ्रॉम एटीपी. व्हेन द सब्सटेंसेस लाइक source are translocated through the phloem tissue, the osmotic pressure in the tissue increase, so the water enter in the phloem tissue from the other cells surrounding it. This entry of water increasing the turgor pressure and cause the flow of food substance in the phloem to the other tissue that need the material and water. They are relatively less turgor pressure. The phloem tissue translocate amino acid, various plants hormone synthesized in the shoot, apex and root. Shoot means top of the tree, apex branch of the tree, apex top of the tree, and root, you know very well, down part of the tree which is under the soil, and certain other organic substance over above carbohydrate. Thus the phloem tissue conduct the substance according to need for the plant, and like that way I explain you the transportation and translocation in the plant, which tissues are carry that function, and how it has done. So entire scenario you understood properly, systematic way. And after this, whenever we meet in the next lecture, at that time I will explain you the transportation in human being and how our heart has do the function, कैसे काम करता है उसके बारे में सोचेंगे. ठीक है, चलिए बाय.